So hello, hi, good evening everyone and welcome back once again to the channel. As you all know guys, I am coming up, I have created in fact a series of the important annual reports from where there are high chances of the questions in RBI Grade B examination. Not only RBI Grade B exam, my dear friends, these reports which we are covering in this series are important for all the examinations. Okay? So, today we are going to cover the World Economic Outlook. Now, do remember from this particular report, the examiner can ask you both objective and descriptive questions. Why? Because this report, this World Economic Outlook report, contains the GDP growth target of the world, of the countries, right? So, that is why they can simply ask you what is the targeted GDP growth for the world, for the India, for USA, for China, any country that they want. Okay. So yeah, let's start with the World Economic Outlook. So we will be covering this report in a way that it covers your objective questions as well as the descriptive questions. Okay, chali. Let's begin with the World Economic Outlook. First of all, what this report tells us. Why we are talking about this report. Remember guys, this report provides us the key global economic trends and policy challenges. ये हमें बताता है कि पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक ट्रेंड है वो क्या है and what are the associated challenges with the global economy, right? And thereafter providing us the global economic trends, it provides us the projections for the near and medium term covering advanced, emerging and developing economies. So all the economies which are the member of IMFs are covered under this particular report. Now you must be wondering that we covered the global financial stability report in the last video. So what are the differences between the global financial stability report and world economic outlook? So as the name says guys, हमने उसमें भी पढ़ा था, ध्यान से अगर आपने देखी होगी वो क्लास तो आपको पता है that in the global financial stability report the IMF tells us that what are the vulnerabilities that the global economy is exposed to and how we can overcome those vulnerabilities. ठीक है, here the IMF gives us the projections of growth. Majorly this report is for the projections of the growth. Okay, it is published by IMF twice a year with interim updates. जनरली ये जो पब्लिश होता है वो अप्रैल एंड अक्टूबर में होता है एंड कोई अपडेट अगर आना होता है तो दैट दे पब्लिश इन द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, so let's talk about the global outlook first and then we will talk about the India's outlook and then we will talk about the projections. ठीक है, so this report has highlighted that after several years of overlapping shocks, the global economy has entered a phase of stabilization. बहुत सालों से आपने देखा होगा, you must have heard for the last 4-5 years, in fact right after the COVID, the entire economy was the entire economy was going through huge inflation, right? तो वो बहुत ओवरलैपिंग शॉक्स थे और उसके ऊपर कोविड का इंपैक्ट था. ठीक है, उसके ऊपर फिर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पूरी दुनिया में चल रहा है इस समय, उसकी वजह से ओवरलैपिंग शॉक्स बहुत सारे कंटिन्यूसली चल रहे थे. बट नाउ द ग्लोबल इकोनॉमी has managed at least to control the inflation and the global economy has entered a phase of stabilization. And do remember they have mentioned a word, cautious stabilization. यानी कि अगर ध्यान से आगे नहीं बढ़ा गया, right, if the global economy shall not remain cautious, then it will again fall back, into that particular loop again. ठीक है ना, तो स्टेबिलाईजेशन तो आ रही है लेकिन दैट स्टेबिलाईजेशन, दैट इज कॉशियस स्टेबिलाईजेशन, यानी अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई, जैसा कि हमने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि जैसे ही कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इन्फ्लेशन डेवलपमेंट होगा तो एसेट प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होंगे बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है. इजंट इट, हमने पढ़ा था. ठीक है, तो यहां पे भी IMF ने बताया है दैट देयर इज अ कॉशियस स्टेबिलाईजेशन. The growth remains modest and projections for global output have been revised downwards from the January 2025 update. देखो अभी उन्होंने जनवरी में जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस करी थी उसका नीचे कर दिया, उसको डिक्रीज कर दिया है इन दी अप्रैल आउटलुक. ठीक है, और उसका रीजन क्या बताया भैया, एक तो हमारे ट्रम्प अंकल ने इतने भयंकर तरीके से टैरिफ लगाए हैं. दिस रिफ्लेक्ट्स अ स्टीप राइज इन टैरिफ रेट्स, policy uncertainty and slowing progress in international cooperation. There is a huge geopolitical crisis going on these days. Russia, Ukraine, India, Pakistan, Israel, Gaza, Israel, Palestine, right? सीरिया में तो चलता ही रहता है. फिर अभी यूके ने भी हथियार उठा लिए हैं.
right? So basically there is a very slow progress in the international cooperation, or you can say that there is a huge geopolitical crisis going on in the world, in the globe, and that is why this led IMF to revise downward the January 2025 projection. The January 2025 outlook projected 3.3% of growth for 25 and 26. For 25 and 26, the IMF projected 3.3% of growth. Okay, but they had to revise it, and the growth has been dropped down to 2.8% in 2025 and 3% in 2026. All right, and this projection, by the way, is much below the historical average of 3.7%. यानी कि 2000 से 2019 इन 20 सालों का जो एवरेज ग्रोथ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का, दैट वाज 3.7%, and the projected growth, that is 2.8 and 3% in 25 and 26, is much below this historical average, right? तो कॉशियस स्टेबिलाईजेशन, स्टेबिलाईज तो हो रहा है, लेकिन ये जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं आपस में, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, यहां पे पूरी दुनिया में काम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से इंपैक्ट भी बहुत आया है। अगर आपको याद है 2022 में यूएस गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, तो नेस्डैक पूरी तरीके से क्रैश हो गया था। ठीक है, सेम हैपेंड इन जापान लास्ट ईयर। ओके, तो ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन एट अ पेस that is slightly slower than what expected in January. It shall reach 4.3% in 2025 and 3.6% in 2026. Okay. What about the emerging markets? Emerging markets in developing economies, basically the countries like India, China, Bangladesh, and other and some Middle East countries. So growth in emerging markets and developing economies is projected to slow with a 3.7% growth rate forecast for 2025, though still above the global average. इमर्जिंग मार्केट्स में भी स्लो डाउन आएगा इन दिस ईयर, इन 2025, ऑल्दो वो ग्लोबल इकोनॉमी से तो ज्यादा ही है, और वो रहेगा ही, बिकॉज डेवलपिंग इकोनॉमी का ग्रोथ रेट हमेशा ज्यादा होता है। डेवलप्ड इकोनॉमी तो भाई ग्रो कर चुकी है ना, अब तो क्या ही ग्रो करेगी। अगर यूएस का ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे हर साल का तो 1-2% के आसपास रहता है, बट ऑन द अदर हैंड इंडिया हैज द ग्रोथ रेट ऑफ 6-7-8%। ठीक है, वाई? बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड यूएस हैज ऑलरेडी डेवलप्ड। ठीक है, एजिंग इकोनॉमीज, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न जाहिर किया है दिस आईएमएफ रिपोर्ट। एजिंग इकोनॉमीज, द ग्लोबल इकोनॉमीज आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड एजिंग, लोग बूढ़े हो रहे हैं, ड्रिवन बाय डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट एंड राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जो फर्टिलिटी रेट है पूरी दुनिया में डिक्लाइन हो रहा है। आपने देखा होगा आजकल आपके बड़े भाई बहन, या आपने आसपास भी देखा होगा दोस्त यारों में, हर कोई एक ही बच्चा कर रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं जो एक भी नहीं कर रहे हैं, उनको करना ही नहीं है। ठीक है, so the thought process has been changed now, and the declining fertility rates and rising life expectancy has led to the rapid aging among the economies, and this will definitely induce a major challenge for the global economic growth. ठीक है, the average age of the world's population is projected to increase 11 years between 2020 and at the end of the century, right? Now that was the global outlook. Let's talk about the India outlook now. ठीक है, मैं आपको इतना कंटेंट दे दूंगा that you will be able to write 600 word answers in your examination, so you guys don't have to worry at all, और सब कुछ कवर भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ छूटेगा। ठीक है, so India will be the fastest growing economy in 2025 and 2026 with a growth rate of 6.2% in 25 and 6.3% in 2026. India will perform better than its counterparts. India will perform better than China. India will perform better than its most global and regional competitors, including China, which is projected to grow at a slower rate. China का growth rate I think 4.4% है, लास्ट में हम टेबल में देख लेंगे, डोंट वरी। नाउ इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट ने हाईलाइट करी है, जो इंडिया का जो ये ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो इतना हाई इसलिए है, या फिर वाई इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द प्राइवेट कंजम्पशन, right? The private consumption is rising in India, and do you know, my dear friends, the surprising fact is that private consumption is particularly increasing in the rural areas. Rural areas का private consumption हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है, which is expected to remain strong even amid global economic uncertainty, and this will, because of this, India will be the fastest major growing economy. ठीक है, now what are the growth drivers? What are the growth drivers of India's behind India's being the fastest major economy?
पहला तो मैंने आपको बता दिया प्राइवेट कंजम्पशन। दूसरा, जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है हमारे देश के, वो अभी थोड़े से अच्छे तरीके से मैनेज्ड हैं, राइट। इंडिया हैज द रोबस्ट फिस्कल मैनेजमेंट with a lower debt to GDP ratio of 56.8% in financial 25, and it is way less than the competitors like USA has the GDP to debt ratio 124%। ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो उसने हमें बचा के रखा है। अलॉन्ग विद दिस फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास बहुत अच्छे खासे पड़े हुए हैं। फिस्कल डेफिसिट हमारा ग्रेजुअली कम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पे वी आर फोकसिंग, we have introduced the structural changes within the economy. We have shifted our economy towards more capitalist side with more participation from the private sector, which has reduced the burden on the government, and the government is using those resources for the social sector benefits। ठीक है, तो जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो अभी ठीक है, जिसकी वजह से we will be we will be the fastest growing major economy। The third driver of the India's economic growth is the government initiatives. A lot of initiatives, like the best example is PM Gati Shakti for infrastructure development, PLI scheme to boost the manufacturing in the countries, right? PM E-Drive scheme for giving a boost to the electric vehicles in the country, right? And there are a lot of other subsidy schemes which are being provided by the government. Make in India, the prime example, Startup India, Pradhan Mantri Mudra Yojana, right? There are a lot of other schemes, other schemes which have which have strengthened the India's growth trajectory. Okay. And then last but not the least, demographics and labor force. India benefits from a growing वर्कफोर्स। अगले 10 सालों में 20 सालों में इंडिया में जिसने पैसा कमा लिया, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर फॉर पीपल इन द कंट्री टू अर्न मनी। ठीक है, अभी ही दौर है, इंडिया का दौर चल रहा है इस समय, तो इस दौर में सब लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो वर्क फोर्स है वो अभी काफी यंग है, ग्रोइंग है, और जो हमारे देश की लेबर पॉलिसीज है उसने फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से फीमेल पार्टिसिपेशन हमारी इकोनॉमी में बढ़ा है, which is again a major driver of India's economy. All right, so that was the drivers, these were the driver of India's economy. लास्ट में अब हम अगर बात करें प्रोजेक्शंस की, सो एडवांस इकोनॉमीज 1.4 इन 2025, इन 2026 1.5, यूएसए 1.8, 1.7, सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर द यूएसए। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज 3.7, 3.9, China 4%, China was not 4.4, it's 4, India of course 6.2 and 6.3, emerging market and middle income economies 3.7, 3.8, and low income developing countries 4.2 and 5.2, and of course पूरे जो ग्लोब का है वो तो याद रखना ही है, that is 2.8, this 2.8 and 3% in 2026। ठीक है, alright guys, that's it for global economic outlook. I hope the entire report is clear. I hope you guys will be able to solve the objective, and you guys will be able to write a good descriptive answer if asked in the examination based on the world economic outlook. If you want to have the PDF of this class, do join the Telegram channel PIB by Manish sir, or you guys can DM me at Mashi Manish, MASHY MANISH, if you are not able to find the PDF or the channel. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.